yoga in IIT Delhi for the last 8 years. She has also been invited from IIT Kharagpur, IIT Jodhpur, and University of Delhi to conduct yoga classes. Trained from 4 different leading schools of yoga, she combines the best of all learnings and shares her understanding from her personal, regular yoga sadhana. We request her to perform Vedic chanting with her yoga students, perhaps the most peaceful way to begin the last event of her very eventful Kaizen 2022. Let us get immersed in the peace of Vedic chanting. Ma'am. Thank you so much, everyone, for being patient. Good evening, everyone. Just I take the yoga classes here, and we love chanting, mantra charan, as you say, and it helps in our spiritual growth. So me and my students will mostly chant in the class or sometime outside the class also. So here you just get a glimpse of it. Okay, thank you. Let's start. Okay, everybody. If you want to feel this, you can just sit straight. Everybody sit straight. Close your eyes. Be very relaxed. Completely relax your mind. Focus on your Agya chakra. That is in between your eyebrows, the place in between your eyebrows. Focus a bit in Agya chakra. We'll start with our Vedic mantras. We'll start first with Omkar. Deeply inhale, everybody. Tatsaviturvarenyam Bhargo devasvadhimahi Dhiyo yona prachodayat. Tvameva mata cha pita tvameva bandhu cha sakha tvameva
त्वामेव विद्यां च द्रविणं त्वमेव त्वामेव सर्वं मम देव देवा योगेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय योगेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय योगेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय योगेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय महादेवाय नमः महादेवाय नमः महादेवाय नमः महादेवाय नमः त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्
Mrityormokshyamamrita. Trayambakam yajamage sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam Mrityormokshyamamrita. Sarvesham Shvatirabhavatu Sarvesham Shantirabhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarvesham Swastirabhavatu Sarvesham Shantirabhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu. Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vashishyate. Shanti. धन्यवाद. Well, that was beautiful. And don't we all feel lightened up and relaxed? So now I'd like to request our General Secretary, Kavya Parnami, to come up on the stage and honor Mrs. Hemanti Mukhopadhyay with a memento. Now, I would like to invite the whole yoga team to come up on the stage. And I request our GSECs to honor them with saplings. Kindly come to the stage, please.
Well, now moving on, let's begin with Bazinga. But before that, something about us. NSS IIT Delhi is the IIT Delhi chapter of the National Service Scheme institutionalized under the Department of Youth Affairs and Sports, Government of India. With a volunteer base of over 2,000 students, we aim to motivate them to benefit the communities that need upliftment. We share the belief that such activities are always means of great satisfaction and joy. Kaizen, the social fest of IIT Delhi, is conducted to recognize the continuous improvements that happen in our society as a result of the combined efforts of all socially motivated student bodies and NGOs across India and abroad. With a footfall of 4,500 plus people, the fest reaches over 100 colleges and students across India. Kaizen is one of the largest social extravaganzas organized in North India by NSS. With the aim of sensitizing our society, we try to discuss problems prevalent in our community and how each individual can have a positive impact. We conduct many flagship events spanning the sectors of education, environment, healthcare, and society. I would like to extend a hearty welcome to you all to our event, Bazinga. Bazinga is a stand-up comedy based on social issues. After shortlisting from numerous entries, we finally have selected the best five. By now, you all must have figured that this event has no boundaries. We are here for you all in hybrid mode. And out of five, one of our participants will be performing online while others are present here in person. Well, Kanishka and I, Laksh, shall be your hosts for the day. It's with great pleasure and our first and foremost duty, we, on behalf of the whole NSS team, warmly welcome you all to this exciting event, Bazinga. I assure you, this event shall be full of exuberance and excitement. Also, needless to say, we all feel honored to have with us our judges, Mr. Tanmay Tandon and Mr. Manoj Bhandari. They are esteemed and well-known comedians, and we can't wait to hear from them. They have joined us via Zoom. Well, damn COVID. So now, without taking much of your time, permit us to start the event. Ladies and gentlemen, get ready to sink into the depth of fun. Before beginning, could I please get a big round of applause for everyone? Well, thank you so much. So I invite our first performer, Mr. Sudarshan. He'll be performing through Zoom, so let's switch to him. Am I audible, everyone? Hello. Yeah, could you please speak? Hello, can you hear me? Hello. Okay. Yes, We can hear yes, you. you're audible on Zoom. Okay. I'll start then. Sorry. I'll start, right? So can you please wait for a moment? Yeah, no Because issues. our offline audience can't hear you right now. No issues. No issues. So we'll first begin with all the offline performances. Cool. I'm so sorry, Sudarshan. We'll just come back to you. Okay. So I would like to invite Abhinava Mohanty. He is our first offline performers. Give him a big round of applause, ladies and gentlemen. Welcome, man.
हेलो हेलो हाय। हाँ, मेरा नाम अभिनव है। सो बड़ा अच्छा लग रहा है कि फाइनली 2 साल बाद हम ऑफलाइन ऐसे इवेंट पे अटेंड कर पा रहे और ये सब होने का एक बड़ा रीजन हम सब अग्री करेंगे मोस्टली वैक्सीन था कि जिस तरह से वैक्सीन इतने जल्दी बने और डिस्ट्रीब्यूट हुए उसकी वजह से ये अभी कुछ इम्यूनिटी बनी है और हम लोग वापस ऑफलाइन आ पा रहे हैं, हम लोग क्लासेस कर पा रहे हैं। ये सब हम अग्री करते हैं, लेकिन ये हमारी मानव जाति में से एक और छोटी सी प्रजाति है, वो इस बात को नहीं मानती। ये जो प्रजाति है ना, ये लॉजिक से इतने परे है कि जैसे मानो वैम्पायर सनशाइन से जितने डरते, ये लोग लॉजिक से ऐसे ही डरते हैं। ये प्रजाति है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, ये है एंटी वैक्सर्स की। इन लोगों के फंडे अलग ही अतरंगी है। इनको लगता है कि दुनिया की सारी संस्थाएं, सारी सरकारें इनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रही है, इनके अगेंस्ट, क्योंकि यही तो है भगवान के आदमी है खास। इनके अगेंस्ट पूरी दुनिया लगी हुई है कॉन्स्पिरेसी करने। आप लोगों को क्या लगता है कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, नहीं, आप लोग थोड़ा थोड़ा सही, थोड़ा गलत है। डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करके, नीट देके, फिर 10 साल और पढ़ाई करके किसके डॉक्टर बनना काफी नहीं है। डॉक्टर बनने के बाद, आप लोगों को पता नहीं होगा, डॉक्टर बनने के बाद एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, सीक्रेट वैक्सीन स्कैम प्रोटेक्शन ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि ये 2 महीने का कोर्स होता है, बड़ा मुश्किल कोर्स होता है, रिग्रेस होता है और सीक्रेटिव कोर्स होता है, किसी को बताना नहीं होता है ये। इस कोर्स के बाद इन डॉक्टर्स को शपथ दिलाई जाती है अपनी डिग्री पे हाथ रख के कि किसी को जिंदगी में नहीं बताएंगे कि वैक्सीन एक स्कैम है। ऐसी बोलती है ये प्रजाति। सही होगा, क्या पता। और मंत्री बनने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको क्या लगता है मंत्री बनने के लिए? मंत्री बनने के लिए भी सिर्फ रैलियों में हाथ हिलाना काफी नहीं है। आपको लगता है सिर्फ रैलियों में हाथ हिलाने से मंत्री बन जाते हैं? नहीं। मंत्री बनने के बाद आपने शपथ देखी होगी, मंत्री शपथ होती है। मंत्री शपथ के बाद क्या होता है ये आपको नहीं पता। उन लोगों को जैसे लाइन में, नर्सरी में लाइन में खड़ा नहीं कराते थे, वैसे लाइन में खड़ा करा कर लेके जाते, एक छोटे से कमरा होता है, अंधेरा सा कमरा, उधर बीच में से आग जल रही होती है, ऐसे बड़ी सी आग होती है, मतलब कंकाल वंकाल लटक रहे होते हैं, ऊपर चैंटिंग हो रही होती है वैदिक सी। उधर बैठे होते हैं ऐसे ही आदमी, वो है शहनशाह वैक्सीन स्कैम। वो उनको उधर शपथ दिलवाते हैं मंत्रियों को कि तुम किसी को नहीं बताओगे इस काम के बारे में। लेकिन ये तो ठीक है, ताज्जुब की बात यह है कि वही मंत्री है जो पूरे पब्लिक को करे हुए वादे यूं भूल जाती है, यूं। लेकिन ये शपथ नहीं भूलती, तभी तो बाहर नहीं आती बात, कोई मंत्री तो बोलते ही नहीं। बट इन लोगों के फंडे सिर्फ यहाँ पे नहीं अटकते। मैं एक दिन ऐसे पार्क में, मतलब सुबह ऐसे बढ़िया से सनशाइन थी, चिड़िया चाय खिली है, मैं घूम रहा हूँ, अंकल मिले, बोला नमस्ते, बात चिड़ी, बोलते कॉलेज कैसा चल रहा है वगैरह, सब बढ़िया। थोड़ी और बात हुई तो वैक्सीन पे बात आई, मैंने बोला कि हाँ मैंने तो ले ली अपनी सेकेंड डोज। बोलते अरे क्या कर रहे हो बेटा, ये वैक्सीन सब काम होता है। मैंने बोला अंकल कैसी बातें कर रहे हो, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, डॉक्टर वगैरह सब। बोलते अरे अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ। ये ना बड़े बड़े बिलियनर है, अमेरिका में बैठे हैं ये लोग ना, चिप होती है ना, चिप, लोकेशन ट्रैकिंग चिप, ये डालते हैं वैक्सीन के अंदर, इसलिए मैंने ली नहीं, मेरा लोकेशन ट्रैक करते हैं ये लोग। मैं सोच रहा हूँ अंकल मुश्किल से आप घर से पार्क से वापस घर आ जाते हो क्या करेंगे लोकेशन लेके? आपका घर का एड्रेस आपने न जाने कहाँ डाल दिया है, पार्क तो पता ही है, ऑफिस का एड्रेस पता नहीं कहाँ डाल दिया आपने। आप डर रहे हो कि ये आपकी पता नहीं कैसे। और ये टेक्नोलॉजी भी अजीब है, मैं आईआईटी में पढ़ता हूँ, मेरे को नहीं पता ऐसी कोई टेक्नोलॉजी कि मतलब बढ़िया टेक्नोलॉजी इंजेक्ट कर रहे हैं चिप्स, बढ़िया। मैंने खैर ये बोला नहीं, मैंने बोला अंकल नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर है, इतनी सारी WHO है, ऐसे थोड़ी करते हैं। बोलते नहीं बेटा तुम अभी छोटे हो, भोले हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, जमाने में ऐसा दिखता है वैसा होता नहीं, जमाना धोखेबाज है। तुम बताओ अंकल अपनी जवानी में खाए धोखे को अभी तक नहीं भूल पा रहे। खैर वैसे सही बताऊं, ये सब जो एंटी वैक्सर वगैरह है ना, ये मैं बताता हूँ असली में क्या है। ये लोग वही है जो बचपन में इनके घर वालों ने इनको ये बोल के डराया था कि बेटा खाना खा ले, बेटा बात मान ले, नहीं तो डॉक्टर अंकल आके इंजेक्शन मार देंगे।
इनका डर अभी तक नहीं निकला, इनका डर अभी तक नहीं निकला। इनकी अभी तक सुई से फटती है, लेकिन ये कहने में थोड़ी लगता है, ऐसे ही 40 साल के अंकल है बोल रहे कि नहीं सुई से फटती है, इसलिए बोलते नहीं हम तो भाई हम तो इंटेलेक्चुअल है, हम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए यार, हम तो इंटेलेक्चुअल है। तो वो बोलते हैं खुद का एंटी वैक्सर। कूल वाइब्स आती है ना, कूल वाइब्स। थैंक यू, दैट वाज माय टाइम, थैंक्स अ लॉट। Well, that was hilarious. There's an announcement. So, yeah. Yeah, so all of you need to wear your mask properly. That is not the nose exposed. And there is no logic like मुंह के ऊपर है, अब तक पता चल गया कि मुंह से वायरस नहीं निकलता है, right? And we got a recent order from Delhi police that they are on the rounds checking social gatherings more than 100. And there would be massive fine if we are found not to obey the protocols, right? So I have that screenshot. It has been shared with the Robinhood team. So kindly, NSS have been doing wonderfully. I request all of you to have, the masks properly. Okay, there was just now somebody fighting that why should we wearing the mask. I'm sorry, but this is why the government order we received just now. Okay, please comply. Thanks, Abhinav, for the wonderful performance. And I hope we don't have any anti-vaxxer in our audience. Lol, we don't. Moving on, we have Madhav Rathi. Big round of applause, ladies and gentlemen. Am I audible? ये सवाल जूम पे ही अच्छा लगता है। Okay, so I am Madhav Rathi. Hello everyone. So आज मैं बात करूंगा हम लोगों की, मारवाड़ी लोगों की। पता है ये सोशल इशू नहीं है, बट हम लोगों की एक्सपर्टीज है सोशलाइज करने में और इश्यूज डिस्कस करने में। हम लोग इतने सोशल हैं कि हमारे यहाँ इंट्रोवर्ट्स भी एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। सो हम बेसिकली दो चीजों के लिए फेमस है, एक बीइंग मनी माइंडेड और दूसरा हमेशा पैसों के बारे में सोचना। मतलब हम लोग इतना पैसों के बारे में सोचते हैं कि हमको प्यार से लोग कैश कॉम भी बुलाते हैं। सो थिंग इज आई कम फ्रॉम अ बेसिक मारवाड़ी फैमिली, अ फैमिली विच विल सपोर्ट यू अनकंडीशनली इफ यू ओबे देयर कंडीशंस। सो हमारी फैमिलीज में क्या होता है ना, दे विल अलाउ अस टू बाय एप्पल आईफोन्स, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट दे विल नेवर अलाउ देयर किड्स टू बाय OnePlus बिकॉज इट सेज नेवर सेटल। हम लोगों में क्या है ना, एक बार बच्चा कमाने लग जाए तो घर वालों की एक ही लाइफ गोल रहता है कि बस सेटल हो जाए शादी करके। मतलब शादी करने की लोगों को इतनी जल्दी है कि लोग सीए करके ऑडिट करने जाते हैं, हमारे यहाँ सीधे मंडप में। अभी मैं एक शादी में गया, वहां पे दूल्हे को देख के ऐसा लग रहा था कि अभी इसकी हाफ डे से छुट्टी करवा के लाए हैं फेरे करवाने के लिए। अभी मुझे भी शादी के दलील आते बिकॉज अब सेटल हो गए। अलग अलग दलीलें आती हैं घर वालों से कि बेटा शादी कर लो, अब उम्र सही है और लड़कियां भी बहुत कम है। मैंने कहा कम है उससे क्या मतलब, मुझे तो एक ही चाहिए ना। जैसे आपने वो मूवी देख रखी होगी दंगल, उसमें एक फेमस डायलॉग है कि मारी छोरियां छोरों से कम है क्या। आई एम लाइक ब्रो, आपकी मूवी हरियाणा में भेज दे, ऑब्वियसली छोरियां कम है। सो नाउ कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट, दैट इज मनी। आपने वो सुना होगा कि डोंट ट्रस्ट एनीवन, लोग रंग बदलते हैं, इसलिए हम लोग यही रोल फॉलो करते हैं। वी नेवर ट्रस्ट एनीवन, वी जस्ट ट्रस्ट मनी। 2016 में उसने भी अपने रंग बदल दिए। वैसे पैसे से याद आया, गूगल पे सब यूज करते हैं ना, गूगल पे में ये फ्रीक्वेंट नोटिफिकेशंस कैसे ऑफ करते हैं कोई बताओ। जितनी बार ये नोटिफिकेशंस आती है ऐसा लगता है कोई अटकी हुई उधारी आ गई, बट पेमेंट नहीं आती। कोरा कागज कोरा ही रह गया और हाथ में खाली कटोरा ही रह गया। मतलब
गूगल पे का तो ऐसा है ना कि हमारे यहाँ पे लोगों की स्ट्रीक स्नैपचैट पे नहीं गूगल पे होती है। जब गूगल पे लॉन्च हुआ ना तो इस तरह से फैला जैसे कोविड, क्योंकि फ्री में तो हम लोग कोलेस्ट्रॉल भी नहीं छोड़ते। मतलब दूसरे ऐप्स को जलन हो गई, ऐसे ऐसे नोटिफिकेशंस आने लगी कि वी नो यू लाइक फ्री प्रोडक्ट्स। हाँ, मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम लोग सांस से भी ज्यादा फाइनेंस लेते हैं, बट ऐसी बात भी नहीं है, हम लोग पैसे भी बहुत अच्छे बचाते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैंने OLX पे एक ऐड देखा, उसमें किसी ने आधा कटा हुआ रेड वेलवेट केक डाल दिया था फॉर 135 रुपीज ओनली। हम लोग पैसे बचाना ठीक है, बट इस तरीके से आपके पास और भी अच्छे तरीके हैं, जैसे ईवी खरीद लो, एनवायरनमेंट को भी अच्छा रहेगा। जैसे मैं एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ, ये पेट्रोल के प्राइसेस तो अभी बढ़े, हम शुरू से एक बहुत अच्छा तरीका यूज करते आ रहे हैं, ढलान पे इंजन का, स्कूटर का इंजन ऑफ कर दो। सो नाउ लाइक coming to end of my act, I would like to say to organizing committee one thing. इन्होंने मुझे बोला कि आप अपने एंट्री वाले वीडियो से कंटेंट ले सकते हैं फॉर योर फाइनेंस। आई एम लाइक, यहाँ पे तो लोग जो सरकार सेलेक्ट हो जाती है वो भी अपना पहले का कुछ बोला वो यूज नहीं करती वापस, तो मैं तो सीधा साधा मारवाड़ी। थैंक यू। Well, thank you so much, Madhav. That was hilarious. Any Marwadis in the house? Because come on, I know there are Marwadis in the house. Yeah. So thank you so much. That was hilarious. And moving on, now I'd like to welcome Praveen Tiwari on stage. A big hand, people. बस ज्यादा मत चढ़ो, तुम ही लोग डिसअपॉइंट होगे। पहले वाले अच्छा कर गए, रिस्पॉन्स देख रहे हो? So basically I'd start with a disclaimer that if I crack any jokes that offend you today, those were written by my driver, not me. मैं ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बाद में आप लोग कंप्लेन ना करो that I'm not being human. कोई नहीं आएगा। So the other day I went to a book fair with my friend and he was like, "Bhai, help me find the best works of fiction. I want to read them." तो मैं उसको लेकर गया और छोड़ के आया रिलीजन वाले सेक्शन में। तो यहाँ मिलेंगे तेरे को बेस्ट वर्क्स ऑफ फिक्शन एवर रिटन। तुम लोगों ने तो एक तो स्टार्ट करवा दिया इससे, मैं कर रहा हूँ जोक्स रिलीजन पे। And I feel people in India really support freedom of speech until you say something they don't like. Like this one time I was doing jokes on how Muslims marry 4 times and have so many wives. और एक आंटी थी बहुत एंजॉय कर रही थी, लाइक ऐसे बगल वाली गोद में गिरे जा रही हंस हंस के। Until I asked, पता है कृष्ण की कितनी बीवियां थी? I could literally see her turning into Will Smith. So yeah, I am an atheist. और ऐसा कुछ खास रीजन नहीं है, it's just that I believe in this thing called logic. पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है सही में, like personally अगर तुम लोग में से कोई मानता हो तो वो आप लोगों का personal belief है. Obviously I cannot expect everyone to be sensible. But as an atheist, like मैंने देखा ना कि like people be like जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब भगवान की मर्जी है. God doesn't make mistakes. Really? लॉन्डे रैंडम लड़कियों को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर रहे हैं, पूजा के लिए जरूरी है विधि, हाउ आर यू सुनिधि? पिकअप लाइन के नाम पे उसको भेज रहा है, यू नो यू शुड चेंज योर एड्रेस नाउ, क्योंकि अब तुम मेरे सपनों में रहती हो. मुझे लगता है ये भगवान ने कभी चाहा होगा? If God doesn't make mistakes, like how else will you explain Instagram trends then? जब इंस्टाग्राम खोलो, यूज दिस फिल्टर टू शो इफ यू हैव येलो टीथ. क्यों? और कौन टारगेट ऑडियंस कौन है तेरी? कौन है जो सुबह उठ के इंस्टाग्राम खोल रहा है कि देख लूं आज इसके दांत पीले हैं कि नहीं?
बट एज एन एथिस्ट मैंने देखा कि लाइक लोग हमेशा तुमको आकर पूछते हैं क्यों नहीं मानते। कभी देखा है कोई किसी को पूछ रहा गिव मी 5 रीजंस व्हाई यू बिलीव इन गॉड? मुझे लगता है इसलिए नहीं पूछते, उनको पता है सामने वाला बता नहीं पाएगा। वही किसी पीटे रीजन आते हैं, किसी को पूछ लो क्यों मानते हो, होते हैं। और तुम्हें कैसे पता? तो होते ही होंगे, सब मान रहे हैं, सब पागल थोड़ी हैं। चलिए ये तो एक अंडरस्टैंडेबल लॉजिक है, इफ इनफ पीपल बिलीव इन इट, इट मस्ट बी राइट। फन फैक्ट, 6 million Jews died because enough people believed in Hitler. अब या तो तुम्हारी हिस्ट्री कमजोर है या जो की खराब है। एंड द अदर आंसर यू गेट इज क्यों मानते हो, इस पे किताब है। दिस इज व्हाट एवरी रिलीजन डज, दैट वी हैव अ होली बुक, इट मेंशन्स आवर गॉड, सो देयर इज वन। हैरी पॉटर पे 7 किताबें हैं। ये नहीं ना हर मंगलवार उसकी मूर्ति पे सिक्का चिपकाऊं, मेक्स नो सेंस। तुम लोग स्टैंड अप सोच के आए थे, टेड टॉक हो गया ना। बट माय फ्रेंड्स कम अप टू मी एंड दे लाइक कि भाई ऐसे गॉड रिलीजन वगैरह पे जोक नहीं करते। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। मतलब तुम्हारे मुताबिक उसने मुझे बनाया, तुम्हें बनाया, ये पूरा ब्रह्मांड बनाया। डोंट यू थिंक ही कैन टेक अ जोक? If for some reason you really feel that your God cannot take a joke by me, 5 फुट के स्विमिंग पूल में डूब जाता हूं मैं। If he cannot take a joke by me, then ask yourself, is he really worth worshipping then? फिर सरकार और भगवान में कोई अंतर नहीं रह गया ना, अगर दोनों ही क्रिटिसिज्म नहीं ले पा रहे। So all I'm saying is, faith or no faith is a choice, and anybody who says otherwise is trying to convert you. Well, that was my time. You've been a lovely audience. This was really very, very funny. Now I invite our last offline performer, Saksham Sharma, for his act. Welcome him with me, guys. Hello, everyone. See, I know wearing a pirate patch in a college fest does not make me funny, but rather stupid. But trust me when I say that it's much better than you guys fainting out when you see what's beneath it. You know, my ass is like a volcano right now. I mean, eyes, like screw my fake accent. So, I mean, this is bad, but what's worse is that COVID cases are on the rise. You know what it means? It means that IIT is going to enter the season of love again. एकदम प्यार के भूखे होते हैं बच्चे, रात रात तक बैठे होते हैं। कहाँ ये मैं नहीं बताऊंगा, काश वो लाइब्रेरी होती। लगे रहते हैं, प्लीज 1 हफ्ते बाद इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा, गार्ड के दोबारा भगाने तक तो रुक जाओ। देखो ना, अभी तो प्रोफेसर के जॉगिंग का भी टाइम नहीं हुआ। सच है, इसलिए तालियां मार रहे हो, आई नो। बट इसमें ना इनकी गलती नहीं है। ये प्यार का भूखा नाटक चालू हो जाता है 10th 11th 12th से ही। प्यार के भूखे होते हैं बच्चे, मैं भी था, पर मुझसे कोई करता ही नहीं था, एक्सेप्ट माय मॉम ऑफ कोर्स। मम्मी तो सबसे करती। बट देन मुझे याद आया कि जिन्हें लगता है कि कोई उनसे प्यार नहीं करता, वो पापा ही तो होते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बाप बनूंगा। नो नॉट इन द वे यू गाइस आर थिंकिंग, ठीक है? इसलिए मैं दिल्ली की सड़कों पे बच्चे ढूंढने निकल पड़ा। आई नो इट साउंड्स रॉन्ग, बट मैं उन्हें पढ़ाने निकला था, ठीक है? एनएसएस स्पिरिट। तो लेकिन मैंने ये भी सोच लिया था कि अपने बच्चों को आईआईटी तो जरूर कराऊंगा। मेरा भी सपना हो, उनका भी सपना हो, साथ में पढ़ेंगे। तो दिल्ली की सड़कों पे मुझे मिले 3 तरह के बच्चे। पहले, जो आपके पैरों से लिपट जाते हैं, पापा आ गए, अब छोड़ के मत जाओ पापा, 10 रुपए के कुतरों खिला दो प्लीज। मैंने उन्हें वही कहा जो मेरे पापा मुझे कहते हैं, क्या रखा है कुरकुरे में, जाओ पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस बनो। एंड देन मुझे मिले सेकंड टाइप के बच्चे, जो आपके पीछे से चिपक के वॉलेट मारने की कोशिश करते हैं।
classic teenagers, I tell you. बाप के पैसों की दीमक. जो तुम ये लोग ऑफलाइन बुक्स के पैसे खरीदते हो ना, ऑफलाइन बुक्स दिखानी ही पड़ेंगे किसी दिन. बट फिर मुझे मिले एक तीसरे टाइप के बच्चे जिनका लोगो होता है कि आप हमें आबाद करो, नहीं तो हम आपका फ्यूचर जनरेशन बर्बाद कर देंगे. ये लोग आगे से अटैक करते हैं, आगे से. फिर क्या, आई हैड टू से एनएसएस स्पिरिट. बस फिर ऐसे ही मुझे जो चिराग मिले, उन्हीं 3-4 चिरागों को इकट्ठा करते हुए मैंने एक जलता हुआ परिवार बनाया. Because of course I had to keep it real. And इसी परिवार के सबसे पहले 3 नियम: परंपरा, प्रतिष्ठा और आश्वासन. आईआईटी के बाद लाइफ सेट है. बट आजकल के बच्चे मानते कहाँ हैं कोई बात माँ बाप की? बोलो, मानते हो तुम लोग? कोई मानता है? अरे तुम्हारी तो मम्मी कहते कहते थक गई कि मैगी के अलावा कुछ और भी खा लो. खाते हो? कान की जू खा जाएंगे पर हेल्दी. सैलेड खा के उल्टी कर देता है ये. बट होता है सबके साथ होता है. एक दिन तुम भी बाप बनोगे. तो लेकिन माँ बाप का फर्ज निभाना था, तो मैंने चालू किया थोड़ा सा ड्रामा. मैंने बोला तुम्हें मालूम है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते. बट आई रियलाइज टू लेट कि मैं गलत ऑडियंस से बोल दिया है. I was like, shit, I can't use this logic anymore. इमोशनल अत्याचार कैसे करूं अब मैं? बट माँ बाप का फर्ज निभाना है. तो मैंने यूज किया मेगा वेपन. जब मैं मरूंगा ना, तब पता लगेगा तुम्हें कौन क्या लगता है तुम्हारा. बस फिर क्या था, मानना पड़ा. फुल बाप वाइब होती. और इन्हीं बच्चों का फिर मैंने वो जो हॉगवर्ट्स की सॉर्टिंग हैट होती है ना, बोलते हुए टोपी कि ग्रिफिंडोर, लेवेंडोर, चुसुंदोर, इसी की तरह मैंने उनका विदाउट मच लॉजिक फ्यूचर डिसाइड करना चालू किया. तू, तेरा नाम मुन्ना है ना, तू एमबीबीएस करेगा. फरहान, कब तक कुत्तों से खेलेगा? चल जाके आईआईटी की पढ़ाई कर, अब्बा हूं मैं तेरा. एंड देन सोनू क्या, तू बनेगा चाय वाला श्रवण कुमार. I mean, to hell with Pitradev Sanrakshanam, you know. I like Piduto. Honestly, people who haven't watched Harry Potter in Hindi are missing out. Do watch. Personal recommendation. And bus, obviously, I did not decide their future just like that. I mean, who does that? एक सेकंड मेरे को ये पिक करना होगा. सॉरी. हाँ सुनो बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ पढ़ रहे ना. अच्छा पढ़ाई नहीं करी ना तो बेल्ट से मारूंगा. ठीक है. अच्छा, और आगे से मैंने कभी किसी इवेंट में पायरेट पैच पहना तो प्लीज मुझे डिसोन कर देना, प्लीज. थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम. थैंक यू वेरी मच. Well, this was hilarious actually. Now we'll be moving on to our online participants. We have Sudarshan Kumar. Sudarshan, are you there? I'm so sorry, audience. I apologize. Just give us a minute. Sudarshan, could you please speak something? Yeah, can you hear me now? Sudarshan, could you please speak? Can you hear me? Hello. Hello. Not working. So can you please try to speak again? Guys, just be patient. We'll be figuring it out and continue with the event.
Mr. Sudarshan, can you please unmute again? You want me to mute or unmute? Unmute. Yeah, I'm unmuted only. While, and I apologize for that. For comedians in the audience. Open stage, open mic. What? Sorry, could you please come again? Who is Subhajit Nandi? Hello. Still testing. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Recite a poem or whatever you want. I am Okay, guys. Since no one is coming, so I thought of sharing something. As a faculty, you all have experiences which are more funnier than you can imagine. Hello. So you will all be relating. Once correcting the major exam paper, I have come across bad handwriting, but I have never come across somebody writing in Hebrew. Right? So it was supposed to be written in English, and I tried to recover whatever was written, and I was absolutely sure that he has written it in Hebrew. So I gave him a 0. Because I tried so much, I couldn't decipher whatever I had written. And then because as faculties, we are supposed to show the copies. So when that guy came, he said, "Sir, this is complete injustice." I said, "Why?" He said, "Sir, you have given me 0 for what logic?" I said, "Because I could not read your paper." He said, "Sir, but that is for that you cannot give me read my paper." I said, "So, and as all of you might be knowing that you call often 20 students together. So I gave him a challenge that ask at random any of your friends to come and decipher what you have written. I'll give you marks." To chup khara hai. And whomever is trying to call, wo haath jo raha hai, nahi sir, uska handwriting to. And generally what happens is, after a faculty is able to convince, the student retires. है ना, हमारा क्रिकेट में रिटायर आउट होते हैं ना, ये स्टूडेंट गया नहीं, उधर ही खड़ा है, पूरा दिखाना हो गया, उसके बाद बोल रहे सर लेकिन मेरे साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो गया. तो आई सेड नहीं हुआ, आपके ये मैं पढ़ नहीं पाया इसलिए मैंने आपको कोई मार्क्स नहीं दिया. Anyway, the story doesn't end here. So he slowly moves out. And then when I was going, Saksham is nodding very strongly because Saksham knows कि ऐसे. तो मैं जब टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ऊपर से नीचे आ रहा था तो मैंने देखा सीढ़ी में वो बंदा बैठा है और मतलब छत के ऊपर ऐसे फेस करके, मतलब जैसे बार में सब लूट जाता है ना, घर सब टूट गया. उसके बाद जो बंदा एक छाव के नीचे ऊपर की तरफ देख के बैठा होता है उसके जैसे बैठा हुआ है. राइट? सो आई सेड मतलब अभी तो सीन अच्छा नहीं है. आई वाज स्लाइटली पैनिक्ड, ये क्या हो गया. तो मेरे को नीचे से तीनों स्टूडेंट ने मेरे को बुलाया, सर आप नीचे आइए.
Luckily, I always used to have a good rapport with a lot of students in the class. बोला सर ये इनका नाटक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये थोड़ी देर देखेगा, आप जब तक दिख रहे हैं आप चले जाओगे वो उठ के चला आएगा. Just don't worry sir, आप please go on your way. So if the next comedian is ready, so I can hand it over to him. So this was one of the experiences. Thank you so much, sir. Now moving on, I hope this works, but Sudarshan, could you please speak something? Hello, hello, hello. I assume I am still not audible, I guess. You're audible on Zoom. We can hear you. Okay, okay. Oh, I can start, is it? Okay, okay. Okay. Sure. Thanks. So, very sorry because of me. ये hybrid mode के चक्कर में your event got delayed, and now, I mean, to be very honest, my bit wasn't worth the wait. Okay, but I'll still proceed. Thanks. So yeah. So hello everyone. So I'm 6'3" and my name is Sudarshan Kumar. Why I'm 6'3", I can't show it to you now on Zoom. I wish I was there. But so you might be wondering कि अपना height से अपना परिचय start क्यों किया, है ना? And see, it's basically because my entire life I've been tall, and it's the only personality trait. It's my entire personality at this point of time, है ना? And I've been hearing ये लंबा आदमी jokes होता है ना, बहुत दिन से सुन रहा हूँ मैं, कि एकदम शुरू में मैं सुनता था कि अरे भाई ऊपर मौसम कैसा है, और फिर मैं थूक के बोलता था उनपे कि बारिश हो रहा है ना? तो this is standard. But then the joke started evolving. So I had gone to a pride parade, okay, and I was as I was LGBTQ flag जो है मैं लहरा रहा था, the pride flag I was hoisting it, and some dude comes up to me and says, अरे भाई आज तो सूरज निकला हुआ है पूरा, रेनबो कैसे आ गया आसमान में? And again उस पे थूका मैं और बोला कि ये ले बरसात हो रहा है, इंद्रधनुष के मजे ले, है ना? So yeah, but speaking of pride parades, any homophobes in the crowd, raise your hand. Any homophobes in the crowd? Okay, good. Good. Oh, sorry for the Freudian slip. Almost मेरे असली रंग दिखने वाले थे, and they were not satrangi, right? But in all seriousness, homophobia to me it makes no economic, fiscal, or no fiscal, and it's just evolutionary self-sabotage. Okay, like no, let's take an example of a type of discrimination we relate to more, misogyny. Okay, everyone knows, has experienced, or has seen, some may have purported some form of misogyny. Okay, तो misogyny का क्या logic है, मतलब उसका तथ्य क्या है कि you give a woman, a girl, equal rights, equal opportunities, equal safeties, and she will be equally successful in any field she desires. Okay, so men may feel insecure कि अरे ये क्या हो गया, मतलब they are taking our resources, quote unquote, right? It feels like some sort of, as a self interest के खातिर people will say things like female detected, opinion rejected, and the females will be like पढ़ाई करवा दिया, तो they'll be like Sudarshan detected, premises vacated, है ना? तो as this is the logic of misogyny. But coming to homophobia में there is no logic. Now stereotypically, what are gay men known for? Okay, so 3 things as per what I've seen. They are very well groomed. Okay, they are quite fashionable, and they are well in touch with their emotions. Okay, and who likes all this? Women like all this. Okay, you know what gay men don't like, or don't want rather? It's women. Okay, now मतलब just let them be ना, मतलब क्यों उनका पीछा ही क्यों करना है, right? So it's like imagine Reebok का CEO comes out of the proverbial closet of his warehouse and says कि हटाओ यार, मेरे को जूता नहीं बनाना है आपसे,
है ना, एंड एडिडास सेज नहीं 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 नहीं, तुमको तो बनाना ही पड़ेगा, उसको खींच के ला दिया मार्केट में कि नहीं तुमको जूता बनाना ही पड़ेगा, व्हेन द रीबॉक गाई डजंट इवन केयर अबाउट शूज, है ना, सो इट्स जस्ट sabotage, right guys? But so this is just corporate, but let's go to nature. Okay, since हम लोग भी एक तरह से प्रकृति से ही है ना, तो can you just imagine there in the jungle, suppose there is a gay lion, okay, and ऐसे वो आराम से चोटी वोटी बांधा है, अपना मेन में घूम रहा है ना, and there is a straight lion, and you go ask the straight lion कि that lion is gay, does it not bother you? The straight line will have no shits to give. He'll be like, यार मेरे को क्या है, वो अपना दूसरा लायन के साथ टाइम पास कर रहा है, मेरे लिए लायनस छोड़ दिया, है ना, so I can be the king of the jungle and he is the yas queen of the jungle, am I right? So the lion will really not care about all these things. So homophobia has no place in society and there is no logic to it. So so one of the I won't say one of the things that I face because I speak vocally about LGBTQ rights is that people come and ask me कि Sudarshan, are you gay? Sudarshan, तू gay है क्या? And I mean, this question, it has no sense, right? It doesn't matter, right? And to be honest, I'm not gay, okay, in the sense that I'm not homosexual, the word in which it is used these days, the meaning. But the English dictionary also has another definition of the word gay, which means to be happy. And if you ask me in that sentence, in that context, ki Sudarshan, are you gay? As in, are you happy? Even in that case, I'm very straight, guys. Life is very tough. And so with that, Sue Depression, that's my Twitter handle. Sue Depression, kaise dikhau? Haan, Sue Depression signing out. And thank you so much for tolerating me and all these technical issues. Thank you, guys. That this awesome evening is moving towards its end, but okay. I would like to thank all the performers for the engaging performances. Now we have two very special performances by our judges. First, I would like to invite Mr. Manoj Bhandari. He is a banker during the day and a comedian at night. Born and brought up in Delhi, he completed his undergrad studies from Venki. He then started his corporate journey in Mumbai and continues to work here. Please welcome him with a huge round of applause. Hi, hello everyone. Can you guys hear me? Hello? Okay, I think there's some problem. Hi, can you guys hear me? Everyone can hear you. Okay, great. Great. So it's good to be here. Firstly, congratulations to all the performers. They've given their best, and trust me, guys, comedy is not at all easy. And I have been failing in comedy like for the last 3 years, almost every day on stage. So it's not easy to make people laugh as much as we think it is. हम अपनी बातों में तो बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें करके हंसा देते हैं, but when it comes to actually performing live on stage, it's very difficult. Trust me, it's very difficult. But good to be here. So the host in the initial pitch, one of the hosts said that the judges have joined us on Zoom, and he literally said that damn COVID. So I want to tell you guys that it's not about being damn COVID. It's about the damn budget of the of the IIT social group, and also I can see some students, a lot of students there standing, sitting there with their masks on. I don't know why they are serious though. मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है. मतलब IIT में हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है तुम पूरे टाइम ही सीरियस रहोगे. I didn't hear anyone laughing but clapping only. That's it. Let me tell you. Let me just start this thing by a famous personality. I think everybody knows him, Charlie Chaplin, right? Everybody knows him. Yes or no? I can't really hear anyone. Anyone?
I would request the participants on the Zoom to So just continue, please. unmute themselves. The participants, please unmute themselves on the Zoom at least. Yeah, okay. Okay. So the famous, this guy, Charlie Chaplin ने एक बार बोला था कि a day without laughter is a day wasted. A day without laughter is a day wasted, guys. मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है इसीलिए ये जितने भी बुड्ढे लोग हैं ना, सुबह सुबह गार्डन में जाके बहुत तेज तेज हंसते हैं. हाँ, they are like 2-3 दिन बचे हैं, ये वेस्ट नहीं कर सकते. So the point is we actually don't know हमारे कितने दिन बचे हैं. So guys, I think everybody should laugh whenever there's an opportunity to do so. So masks मैंने देखा, masks सबने पहने हुए हैं यहाँ पे IIT में, and which is a very good thing. मास्क तो आजकल तो मना कर दिया है, हमारे मुंबई में मना कर दिया है, दिल्ली में भी मना कर दिया था, अब तो मास्क अलाउड नहीं है. Although the COVID is increasing, so the masks are back now. But I see the IITians are actually handling this well. पूरा मास्क पहना हुआ है. All I can remember is हमने actual में COVID के टाइम पे अपनी नाक और मुंह से ज्यादा अपनी डबल चिन और ट्रिपल चिन छुपाई है. Right? Each one of us knows that. So I remember this one incident. I was actually somewhere for a meeting. I went for a meeting somewhere, and this guy enters the room. All right, and he was without the mask. And I told him, "Bhai, mask kahan hai tera yaar? Mask to pehn le." And he was like, "मैं सांस नहीं ले रहा." And I was like, "कि सांस ले ले, नहीं तो बिना कोविड के मर जाएगा." You know, that kind of things people have done. One thing which I have seen is that educational institutes have evolved these days. They have actually evolved, and especially schools. Schools have evolved so much that schools have now their own Instagram accounts. Do you understand? And what are they showing on those Instagram accounts? कुछ भी नहीं है. They're just like उनकी photos लगी हुई हैं वहाँ पे. और you know, एक Instagram account check करा मैंने एक school का. I recently went there to perform. उनका Instagram account मैंने check किया. और उनके Instagram account में ना उन्होंने अपनी building, एक library की building उन्होंने डाली हुई थी. And they were like 3-story library building for unlimited number of students. हम सोच रहे हैं कि हम इसकी 4th story भी बना दें. So for उसी के लिए next month से हम लोग स्कूल की फीस इंक्रीज कर रहे हैं. Like what a good way to market themselves, right? कितनी अच्छी marketing strategy है. Back in my days when I was in school, हमारी सिर्फ एक ही marketing strategy होती थी स्कूल की, pamphlet छपवाना. और वो pamphlet जो आते थे वो न्यूज़पेपर में आते थे. You remember those pamphlets? जो न्यूज़पेपर जब तुम उठाते थे तो pamphlets गिर जाते थे नीचे. हाँ, उन pamphlets का सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज था. उनको हम एयरप्लेन बना के क्लास में ही हम फेंकते थे, क्लास में ही हम लोग यूज करते थे. See, the point which I'm trying to make is कि अब ना सबका सब जितना भी हो गया है स्कूल का, it's all शोबाजी. सिर्फ शोबाजी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है. Everybody is like behind them, behind money. They want to give education तो ठीक है, education तो हर स्कूल में मिलता है, but what they want to do is they want to make as much money as possible, right? So recently मैं अपने एक friend के साथ गया था एक स्कूल में उसके बच्चे का एडमिशन कराने, and when we were sitting there, the principal right there, the admin head right there, he said कि सर आपको ना सारी जितनी भी बुक्स हैं वो सारी स्कूल से खरीदनी पड़ेंगी, आपको जो स्कूल की यूनिफॉर्म है वो भी स्कूल से खरीदनी पड़ेगी, आपको जो स्कूल बस आपको यूटिलाइज करनी पड़ेगी, इवन दो यू हैव योर ओन व्हीकल, बट आपको स्कूल बस यूटिलाइज करनी पड़ेगी. He was like, we give the best books, we give the best thing, we give everything best. And I was like, sir, what about education? And he was like, उसके लिए हमने ना बायजूस के साथ हमने टाई अप किया हुआ है, तो you can also take बायजूस membership through us, and you will get 20% back. So you know what I'm trying to say, कि पूरा education system जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ महंगा होता जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा.
एंड इसकी वजह से पता है क्या हो रहा है, इसकी वजह से पीपल हु आर एक्चुअली न्यूली मैरिड, उन लोगों को दिक्कत हो रही है. दे आर डिसाइडिंग टू नॉट हैव किड्स. Yeah, I saw one of the participants, going up on stage and saying, "मैं बाप बनूंगा." But when it comes to reality, कोई नहीं बनना चाहता है आज की डेट में बाप. जिसके पास बिजनेस है, जिसके पास अच्छा पैसा है, वही बाप बनना चाहता है. I am in that category right now, wherein I have to decide that yes, I have to, maybe I have to take that decision to become a father at the end of the day. So I keep on reading about kids, anything and everything related to kids. I keep on reading them. So recently I came across this print ad, all right, and it was a really interesting print ad, which said that how to save and invest for your child's education. It also said that did you know that fees of premier B schools in India has risen by 400% from 2010 to 2020. It also said that higher education costs in India have the highest inflation rates. So invest in mutual funds. और नीचे लिखा हुआ था फाइनेंशियल एडवाइजर. एंड आई वाज लाइक, कैसा एडवाइजर है भाई तू? हैं? एडवाइस कर रहा है, डरा रहा है. मतलब मेरे जैसा बंदा जो पिछले 2-3 साल से सोच रहा है कि बच्चा करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, तेरी एडवाइस सुन के मैं अपना क्या अपने दोस्त का भी नहीं होने दूंगा यार. हाँ? मैं रोक दूंगा उसे बीच में, पर वो नहीं रुकेगा. यू नो व्हाई? क्योंकि प्रेशर ही इतना है. पता है कितना सोसाइटल प्रेशर है गाइस. मतलब पूरी दुनिया पीछे पड़ी है यार, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो. मेरी मेड 1 साल से पीछे पड़ी है, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो. मेरी मम्मी उसे ना महीने के 2000 रुपए एक्स्ट्रा देती है. वो रोज आके मुझे बोलती है, भैया दूध पी लो, आपको बच्चा करना है. और मेरे मम्मी पापा ने पता नहीं कब से सपने सजा रखे हैं, पता कब से, मतलब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब से सपने सजा रखे हैं कि यार बेटे का बच्चा होगा एक दिन. और अब तो पता पागल ही हो गए हैं यार, अब तो पागल ही हो गए हैं. मतलब अभी थोड़े दिन पहले ना मम्मी आई थी दिल्ली से, अपने घर से बॉम्बे मेरे घर. ठीक है, आते ही मुझे कहती है, मनोज कब से कह रहे हैं हम बच्चा कर ले, बच्चा कर ले, बच्चा क्यों नहीं करता तू? एंड आई वाज लाइक, मॉम, कहती मुझे नहीं पता, तू आज ही बच्चा कर. एंड आई वाज लाइक, मम्मी आप इतनी दूर से आ रहे हो यार, दिल्ली से, आप दरवाजे के अंदर तो आ जाओ. हैं? सारी बातें आपको दरवाजे के बाहर ही खड़ी खड़ी करनी है. एंड आई सो एट हर फीट, उन्होंने चप्पल नहीं पहने थे. एंड आई वाज लाइक, आपके चप्पल कहाँ हैं? मुझे कहती है, मुझे बाबा जी ने बोला था कि अगर मैं नंगे पैर दिल्ली से बॉम्बे आऊंगी ना तो तेरा बच्चा होगा. एंड आई वाज लाइक, बाबा? मेरी मम्मी ना इतनी तेज बोल रही थी, वो सामने वाले फ्लैट से ना एक आंटी बाहर आ गई, कहती बहन जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी इसे ना 1 साल से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ. एंड आई वाज लाइक, यार मम्मी यार आप इनकी मत सुनो, आप अंदर चलो. मैं अंदर लेके आया मम्मी को. ठीक है, मैंने पानी दिया मम्मी को. मैंने कहा मम्मी पानी पियो. कहती नहीं पीना मुझे पानी यार. तो मुझे एक बात बताओ, मतलब क्या दिक्कत क्या है, नहीं हो पा रहा है क्या? एंड आई वाज लाइक, मम्मी, कहती नहीं हो पा रहा है तो बाबा ने उसकी भी गोली दी है. एंड आई वाज लाइक, मम्मी नहीं है यार ऐसी बात, यार कैसी बातें कर रहे हो आप? एंड शी वाज लाइक, तो मुझे बताना दिक्कत क्या है यार, दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है तो यार हमें बता, हम पाल लेंगे तेरा बच्चा. एंड आई वाज लाइक, आप पाल लोगे? आपको कौन पालेगा? मैंने उन्हें वो प्रिंट एड दिखाया. मैंने कहा है इतने पैसे? और अगर है तो कहाँ छुपा रखी थी वो जायदाद? कहाँ छुपा रखी थी वो जायदाद जब हम छोटे थे? हम ही ढंग से पाल लेते. और अगर अब आ गए हैं पैसे तो हमें ही दे दो ना यार पैसे. हमसे हम नहीं पाले जा रहे. तो साली जब से जॉब लगी है तब से नेगेटिव चल रहे हैं. सैलरी आने से पहले ही खत्म हो जाती है. इससे बढ़िया तो पॉकेट मनी थी यार, पॉजिटिव तो थे कम से कम. हम पाल लेंगे तेरा बच्चा. कितना इजी है बोलना यार, हम पाल लेंगे तेरा बच्चा. मतलब पता है क्या हुआ है, पापा ने ना बचपन से लेकर अभी तक, आज तक मेरे नाम पे ना 2 LIC पॉलिसी कराई है, बस 2. उनके प्रीमियम भी मैं ही भर रहा हूं. उनके प्रीमियम भी मैं भर रहा हूँ गाइस. हम पाल लेंगे तेरा बच्चा. मैंने ना एक आर्टिकल पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले. ठीक है, एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि 2010 में
अगर तुम्हें अपना बच्चा पाल पोस के बड़ा करना है, एजुकेट करना है, और 21 साल तक अगर बड़ा करना है, तो उस टाइम पे 50 से 55 लाख रुपए लगते थे। ठीक है, आज की डेट में अगर तुम वही सम इन्फ्लेशन वगैरह सब मिला लो ना, तो वही जो 50 से 55 लाख का जो सम है, वो 1 करोड़ 20 लाख हो गया है। 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख मैं किसी और पे खर्च कर दूं। हाँ, और 21 साल बाद अगर वो मेरी तरफ फुद्दू निकला तो मेरे तो लग गए ना भाई, मैं क्या करूंगा फिर। हम पाल लेंगे तेरा बच्चा। अगर वो, और वो जो प्रिंट एड जो मैंने पढ़ा था ना गाइस, आई थिंक इट्स द बेस्ट एड। आई थिंक इट्स द बेस्ट एड फॉर, बट नॉट फॉर म्यूचुअल फंड्स। आई थिंक इट्स द बेस्ट एड फॉर कॉन्डम्स। कॉन्डम्स। वो म्यूचुअल फंड्स का तुमने एड ना जब भी सुना होगा, ठीक है, जब भी कहीं पे देखा होगा, तो म्यूचुअल फंड्स के एड के सामने ना ये आता है, दैट म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड योर ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आई थिंक उस प्रिंट एड के नीचे ना ये लाइन काट के ना ये लिख देनी चाहिए, दैट हैविंग किड्स कैन इंक्रीज योर फाइनेंशियल रिस्क, प्लीज यूज योर condoms carefully. So I think all these schools and everything, everybody is, सबके सब एक ही जगह जा रहे हैं. Nobody is thinking about the bright future of kids. I think it is a money making business at the end of the day. You see, you look at hospitals, you look at all the schools, you look at colleges. I don't know where it is heading. I think we need a really good, I would say, a turnaround in the education sector to deliver, good education at lower cost. हर कोई afford कर पाए. नहीं तो जैसे ये हमारे जो थे ना सोशल वर्कर जो बाप बन के निकल रहे हैं सड़कों पे, ऐसे हमें जाना पड़ेगा फिर सबके साथ। बाप बन के हमें भी ढूंढने पड़ेंगे 3-4 लोग, 5-6 लोग, 5-6, 10 ऐसे लोग, सुपर 30 हमें भी बनाना पड़ेगा अगर हमें अच्छा एजुकेशन देना है तो. But anyway, so that was my only social bit that I had. I would like to share now my experiences as a stand-up comic in the last 3 years. So I started doing stand-up comedy like 3 years back, guys. All right, and pretty soon I realized when I went into stand-up comedy that stand-up comedy is actually very, very tough. Yeah, I think stand-up comedy is just like mathematics. Yeah, फर्क बहुत टफ है. फर्क सिर्फ इतना है कि मैथमेटिक्स में मैं बचपन में साल में 1 बार फेल होता था. लाइक स्टैंड अप कॉमेडी में मैंने 100 बार के बाद गिनना छोड़ दिया है. आई फेल एवरी डे व्हेन आई गो ऑन स्टेज. आई फेल. ठीक है, बट ऑफ कोर्स देयर आर सम सक्सेस स्टोरीज, बट आई डोंट वांट टू टेल यू माय सक्सेस स्टोरीज. So stand up comedy has done one thing to me. All right, it has changed my perspective. Earlier I used to think, bhai, you are stupid, you are stupid, you are stupid, you are stupid. Now I am like, I am also stupid, everybody is stupid. Stand up comedy has also changed me as a person. It has from an extrovert, it has turned me into an introvert. Earlier what used to happen, हम 6-7 दोस्त लोग बैठे रहते थे, सब कोई अपनी बातें कर रहे हैं, हर कोई हंस रहा है अपनी अपनी बातों में. अब ऐसा हो गया, हम 6-7 दोस्त साथ में बैठे होते हैं, बाकी के बाकी सब अपनी बातों में हंस रहे हैं, एंड आई एम ऑलवेज क्वाइट. आई एम ऑलवेज लाइक, ओ भाई क्या फनी बोला है यार तूने, एंड आई एम ऑलवेज बिजी राइटिंग दीस जोक्स. But stand-up comedy has changed me as a person. It has done one thing. Like right now, like I can't have normal conversations with people around me anymore. No, I can't. Because I don't know why, but people around me are always conscious. They're like, oh, we can't talk normally to this guy because then he will make fun of us and then he will use us in his jokes. And I'm like, yeah, people, as if I don't use you in my jokes, nobody is ever gonna form any opinion about you, and nobody is ever gonna know that some of you are dumb. Yeah, like my wife. I recently na hum ek party se वापस आ रहे थे, and we were sitting in a cab, all right, and I was quite drunk, and my wife looked at me and she was like, Manoj, look at you, man, you're so drunk, you're not even in your senses. I can't even talk to you, man. I swear on my dad, I'm gonna talk to you only when you will be back in your senses now. The first thing that I said to her was,
Wow, what an incentive to be out of my senses all the time. The second thing that I said to her was, तुझे तेरी मम्मी की कसम है अगर तूने अपने बाप की कसम तोड़ी तो. And the third thing that I said to her was, how dumb of you to scold me for being out of my senses while I am already out of my senses. It's like तुम रास्ते पे चल रहे हो, किसी अंधे बंदे से टकरा गए, तुम उसे ही डांट रहे हो कि तू देख के क्यों नहीं चलता. For those of you who are wondering that this is a joke on that andha guy, no, this is not a joke on that andha guy. This is a joke on my wife. But anyway, ये जो तीनों बातें मैंने अपनी वाइफ को बोली ना, ये मैंने अपने मन में बोली. Actually मन में नहीं बोली, because I'm not that smart, right? I'm not that smart कि वाइफ ने कुछ बोल दिया और मैंने ना उसका बारी से 3 सेंटेंसेस में उसका आंसर दे दिया, 1 2 3. नो. ये तो मैंने अगले दिन सुबह बैठ के सोचा 2 घंटे कि मैं उसका क्या जवाब दे सकता था. And that is how I came up with this answer. But the point is, I can't have normal conversations with people around me anymore, because I don't know why. But people around me are always trying to be funny. Yeah, anything that they have to say to me, they are trying to bring some funny element into it, which is fine, which is absolutely fine. But you have to be funny, right? Like मैं अभी ना अपनी ऑफिस पार्टी में लेके गया था अपनी वाइफ को, ठीक है, और वहां पे ना ऑफिस का मेरा एक कलीग है, वो आके बोलता है मेरी वाइफ को, मैम व्हाट अ टैलेंटेड हस्बैंड मैम, यू आर सो लकी मैम, आप तो 24 घंटे हंसती रहती होंगी मैम. कोई सेंस है इस बात का? इमेजिन समवन गोइंग टू जॉनी सिंस वाइफ एंड सेइंग, मैम व्हाट अ टैलेंटेड हस्बैंड मैम, यू आर सो लकी मैम, आप तो 24 घंटे. It does not make any sense. I don't know why people are trying to be funny. Like my father now thinks that he's funny. मेरे पापा को लगता है कि अब वो फनी है. अभी थोड़े दिन पहले ना मेरे पापा ने मेरे को बुलाया, मुझे कहते हैं, मनोज मैंने भी एक जोक लिखा है. एंड आई वाज लाइक, सुनाओ. कहते हैं एक बात बताओ, एक छोटे चिकन ने एक बड़े चिकन से क्या कहा? आई वाज लाइक, क्या? कि तुम्हारी ये चिक चिक मुझे पसंद नहीं. फनी है ना मनोज, फनी है ना. मैंने कहा यार डैड, इट इज डैम फनी. एंड ही लाइक, तो एक काम कर, तू यूज कर ले इस जोक को, तू रख ले इस जोक. एंड आई वाज लाइक, यार डैड, आई विल यूज दिस जोक, आई विल यूज इट, बट आई विल आल्सो टेक योर नेम. So that's about it, guys, from my side on the jokes front. What I want to say is all the very best to these guys, and thank you so much for welcoming me, and thank you so much for giving me this opportunity. And back to the host, please. Thank you. Thank you so much, guys. I hope you all loved it too. So next up we have Tanmay Tandon. He is a stand-up comedian and an MC. He comes from the city of Nawabs, Lucknow, and he has been telling jokes professionally since he was 16 and has done over now to 200 shows. He's been doing comedy for over 4 years now, and his genuine storytelling comes from his real-life observations. So let's welcome him with another huge round of applause. हेलो गाइस, हाय क्या चल रहा, म्यूट कर दो. हाँ, मैं देख रहा हूँ यार, तब से इंजीनियर स्ट्रगल कर रहे हैं वो जूम को कनेक्ट करने में, क्योंकि वो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू गाइस, आई कांट हियर यू गाइस. आई हैव नो आइडिया इफ यू गाइस आर लाफिंग ऑन दिस जोक, और पता नहीं, मुझे पता है सब यहाँ क्यों बैठे हैं. मैंने अभी पूरी चैट पढ़ी, मैं समझ गया. किसी ने चैट पे पूछा कि इफ वी जॉइन ऑनलाइन विल वी गेट NSSRs. फिर अब मैं समझ गया हूँ ये सारे लोग क्यों बैठे हुए हैं. अरे वाह, अरे आई कांट हियर यू गाइस, बट मुझे दिख रहा है लोग तालियां बजा रहे हैं. एंड मैं देख रहा हूँ लोग इतने, लाइक वो कैमरामैन इतना बोर हो गया, उसको लग रहा है IPL चल रहा है, वो सिर्फ लड़कियों पे जूम किया जा रहा है. सही है यार, नहीं कोई दिक्कत. Man, this is so weird because I have done offline live shows, I have done online show. This is the first time in my life मुझे प्रोजेक्टर पे डाल दिया. ये देखो, एकदम प्रोजेक्टर पे डाल दे. आई फील लाइक आई एम नरेंद्र मोदी. वो उनका होता रहता है वो एजुकेशन वाला, वो आते बताते हैं बच्चों पढ़ो, ये सब बिल्कुल वही फील आ रहा है मुझे. IIT के बच्चों को बता रहा हूँ मैं.
एंड मैन आईआईटी वाले बच्चों यार ये बताओ यार, तुम लोग को पढ़ाई भी करनी है, तुम लोग को कॉमेडी भी करनी है, मतलब कुछ तो छोड़ दो भाई, कुछ तो छोड़ दो। मार्क्स भी ला रहे हैं, कॉमेडी भी कर रहे हैं, एकेडमिक्स भी कर रहे हैं, को करिकुलर भी कर रहे हैं यार, क्या चल रहा है यार। Anyway, guys, my name is Tanmay. My name is Tanmay Tandon. I'm here because Tanmay Bhatt was not available. Uh, if Tanmay Bhatt and Amit Tandon ever had a child, you know what they're calling it. I come from a very developed state, very progressive state, very developed state called Uttar Pradesh. एकदम मस्त, वहाँ क्या चल रहा है यार। ये मैं सोचा था ये प्रेमाइस मानूंगा, फिर पंचलाइन किसी को पता नहीं होगा, मैं लखनऊ से उत्तर प्रदेश, लेकिन वो इंट्रोडक्शन में बोल दिया, विच इज फाइन, चलता है। मैं लखनऊ में क्या चल रहा है यार मैन, इट्स वेरी टफ टू डू कॉमेडी इन लखनऊ में, इट्स वेरी टफ टू डू कॉमेडी इन यूपी, बिकॉज पता है वहां पर हु इज माय बिगेस्ट कॉम्पिटिटर देयर, योगी आदित्यनाथ। वो बंदा किल किए जा रहा है भाई कॉमेडी में, किल पे वो 5 साल अपना स्पेशल किया, फिर से आ गया अपना स्पेशल निकाल ले। Man, but it's genuinely tough to do comedy. Let me tell you guys, all the 5 comics that you just saw, please give them a huge round of applause. It's genuinely very tough to do comic. Yeah, I can see people clapping, but I can't hear shit. Yeah, it's tough to do comedy because मेरे घर पे कोई आता है, बोलता है आपका बेटा क्या करता है, and my dad is like, जी ये स्टेज पे जाके चुटकुले सुनाता है, jokes. And it's so funny. I'm very close to my grandmother. But my grandmother has no idea what stand-up is. उनको कुछ आइडिया ही नहीं है, तो तब भी वो फ्लेक्स किए जा रहे हैं, अपने दोस्तों से फ्लेक्स किए जा रहे हैं, अरे हमारा पोता वो स्टेज पे जाके भाषण देता है। And I'm like, no दादी, भाषण नहीं है, I mean हाँ भाषण है, but like funny भाषण। So now my dadi thinks I'm Rahul Gandhi. And man, I know why all the IIT students are doing jokes now, man. मुझे पता है IIT वाले क्या कर रहे हैं, क्यों स्टैंड अप में आ गए हैं, बिकॉज हम लोग के एज ग्रुप में क्या होता है ना, हम लोग के एज ग्रुप में नॉट अंकल आंटी, हमारे एज ग्रुप में कोई आता है बोलता है, लाइक मेरे पास कोई आता है, कोई बोलता है, ब्रो तन्मय यू डू स्टैंड अप राइट, यू मस्ट बी गेटिंग ऑल द गर्ल्स नो, एंड आई एम लाइक नो, बाय दैट लॉजिक हैव यू सीन राजू श्रीवास्तव, वो बंदा पेट सफा का ऐड कर रहा है गाइस, वो देखो एक बंदा कैमरे में हाथ हिला, देख लिया भाई मैंने तुझे, देख लिया, दिखा तू मुझे, पहन ले, मास्क पहन ले यार, पुलिस राउंड में है, मुझे नहीं पहनने की जरूरत है। Man, but if you go and tell someone you're a comedian, their immediate reaction is, "अरे comedian, चल joke सुना." See, you don't do that with a musician, right? You don't do that with a singer. अरे you play guitar, man, चल गुलाबी आ गया. If I meet an IIT student, I won't go like, अरे IIT student, suicide. I'm so sorry. Man, I cracked this joke last month in IIT Bombay. I was performing in IIT Bombay and nobody laughed. And फिर मैंने शो के बाद पूछा, यार तुम लोग ऑफेंड हो गए क्या, ये कुछ जोक हो गया? He's like, नहीं सर, अभी 1 हफ्ते पहले ही केस हुआ था इसलिए। I'm like, अरे touchy topic. Man, and before lockdown, I was performing in VIT Chennai. You guys know VIT तो पता होगा, तुम लोग का एडमिशन यहाँ नहीं होता, वही जाते। तो I was hanging out with all these engineering students in VIT, and वो लोग मुझे बता रहे हैं कि उनके हॉस्टल में जो फैन है, उनके हॉस्टल के फैन पे नीचे केज लगा हुआ है फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड मैंने बोला, भाई ये कैसा कॉलेज है भाई जो पंखे के नीचे केज लगा सकता है, बट बच्चों के लिए कूलर एसी नहीं लगा सकता है। I hope IIT में तो केज का कोई सिस्टम नहीं है ना। I can't hear you guys, it's fine. But man, lockdown was very tough, man. This is the last time I'm doing an online show. I mean, ये तो offline है, but मैं online हूँ. But this is the last time because तो यार online में क्या हो रहा है यार, कुछ भी हो रहा है guys. कोई भी I remember I was doing this online. I forgot the joke. Never mind, I forgot the joke. I was just saying online classes are so bullshit, man. All these kids are having online classes. All ये केजी के बच्चों की online classes. तुम लोग को पता है केजी के बच्चों की online classes हो रही थी लॉकडाउन के समय. And I'm like, यार केजी के बच्चों की online class, केजी के बच्चे को अगर लैपटॉप पे मीटिंग आईडी और पासवर्ड डालना आता है तो उसको तुरंत गवर्नमेंट जॉब दो भाई. क्या बच्चा है यार ये, मतलब यार बच्चे, अगर बच्चा ABC लिख रहा है तो उसको बीजेपी लिखना सिखाओ यार.
Man, but lockdown was tough, man. Lockdown was tough because मेरे घर में हम सब इतने खाली हो गए यार, इतने खाली हो गए. My mom is like, bro, तन्मय तुम इतने खाली हो गए, एक internship कर लो. And I'm like, mom, वही तो कर रहा हूँ. Stand up is the longest unpaid internship out there. Stand up में, let me tell you guys, let me be very honest. Stand up में पैसा is just like अच्छे दिन नहीं आने वाले. Oh man, but I was actually doing an internship in Mumbai. I'm from Mumbai. I'm from Lucknow, but I'm in my final year college in Whistling Woods. I'm in a filmmaking college called Whistling Wood, and it's very funny because हमारे college की tagline is "Do what you love." हमारे college की t-shirts और college की t-shirt के पीछे लिखा गया है "Do what you love," and I'm like, I want to, but she doesn't accept my follow request. And I'm from UP. For me, it should be do what you love, but with consent. People who have been to Mumbai, don't give me a check. Just raise your hands. I can't hear anything. Just people who have been to एक बंदा Mumbai. हाँ, Delhi से मैं गया था Mumbai. Man, I came to Mumbai for the first time for my entrance exam in 2019, and you know क्या होता है? आप Mumbai आते हो. The thing about Mumbai is every third person here is a celebrity, man. Every third person is a celebrity or a loser or both. Kangna Ravado. Yeah, man, itne celebrities चल रहे because क्या होता है ना, आप if you go to some other, if you go to Delhi and you ask them यार कोई tourist place का, वो तुम्हें इंडिया गेट ले जाएगा, जयपुर ले जाओ तुम्हें हवा महल ले जाएगा. मैं आया मुंबई, मैं अपने पेरेंट्स के साथ आया, हम लोग ने एक गाइड को पकड़ा, उसको बोला भाई कहीं ले जाओ कोई टूरिस्ट प्लेस दिखाने, तो वो हमें शाहरुख खान के घर ले गया. बोले ये देखिए शाहरुख खान का घर, ये देखिए सलमान खान का घर, ये देखिए ये अनु मलिक का घर. ये अनु मलिक का घर कौन दिखाते यार? अनु मलिक का घर टूरिस्ट स्पॉट. मुझे वो बंदा अनु मलिक की बिल्डिंग थी, बोलता सर ये देखिए अनु मलिक का घर, ये उसकी बिल्डिंग है. आई एम लाइक हाँ ऊंची है बिल्डिंग. This joke is just for me. I have no idea if you guys liked it or not. एक तो सब मास्क भी पहने हुए. But no, man, I genuinely asked him, no, bro, take me to some authentic tourist place. So he took me to Haji Ali Dargah, and he told me people who don't know Haji Ali Dargah, it's like the most sacred tourist place in Mumbai. It's a dargah where it said, the guide told me, whatever you will wish for here will come true. And I'm like, I'm from UP. So I wished for Ram Mandir. और वो बन गया. I'm like, yeah. Now I have faith on two religions all together. I am a very strong believer of Haji Ali Dargah. फिर वो बंदा मुझे वहां ले गया, गेटवे ऑफ इंडिया. मुझे ले गया गेटवे ऑफ इंडिया. मैं खड़ा हूँ वहां पर, बोला सर ये देख रहे हो सर? बोला हाँ देख रहा हूँ सर, यहाँ से टेररिस्ट आए थे. फिर उसने 180 बैक फ्लिप मारा और बोला सर वो देख रहे हो, वो ताज, वहां पर टेररिस्ट गए थे. I'm like, हाँ मेक सेंस. Man, but sorry, I was talking about internship and I got totally lost. Yeah, I was. अच्छा थोड़ी ताली बज रही है. Okay. I saw some people clapping. Cool. Guys, if you guys are laughing, just raise your hands like this. मैं समझ जाऊंगा कि लोगों को मजा आ रही है. Because क्या होता है ना, मुझे तो लग रहा है क्या किल कर रहा हूँ यार मैं. क्या ऑडियंस क्या मजे कर रही है और बैठे हुए लोग मास्क पहन के, पता ही नहीं चल रहा है. हाँ मैन, सब हाथ हिलाए. वाह मैन, लाइक प्रॉपर मोदी फील आ रहा है मुझे. उसमें भी सर मोदी सर ऐसे. But no, so I was doing an internship in Mumbai in front of Antilla. Antilla is you guys know what Antilla is, right? The world's largest house. वहाँ कोई रहता भी नहीं है, पता नहीं क्यों. I was doing an internship right in front of Antilla, और वहाँ पर मेरे जियो में नेटवर्क ही नहीं आता. वहां पर मैं 2 महीने ऑफिस में रहा, वहां पर नेटवर्क ही नहीं आया. मैं रोड क्रॉस करके गया, मैंने बोला ओए मुकेश बाहर आया. अंबानी. मैंने बोला ओए क्या सीन है भाई, ये क्या रिलायंस का नेटवर्क नहीं आता? तो बोला भाई मैं खुद एयरटेल यूज करता हूँ. But man, I was so free in this pandemic, man. I was so free, and like every free Indian guy, every night I used to watch TED Talks. क्या तुम लोग को क्या I used to watch TED Talks, and पता है मैं YouTube पे देख रहा हूँ वीडियो. and YouTube पे आपको when you're watching a video on YouTube, तुम लोग को पता है वो एक ऑटो प्ले रिकमेंडेशन स्टार्ट हो जाता है. तो उसपे
मैं टेड टॉक देख रहा हूँ, फिर एक पिंपल पॉपिंग वीडियो स्टार्ट हो गया which was titled as most satisfying pimple popping video and I'm like bro, कोई इंटरनेट पे फुंसी फोड़ने को कंटेंट बोल के बेच रहा है, कोई इंटरनेट पे फुंसी फोड़ेगा और लोग देख भी रहे हैं, लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, अरे भाई क्या सेटिस्फाइंग, एएसएमआर एएसएमआर। Okay, one last joke before I go, one last social joke. I have to crack a social. Okay, let me just be very honest. मुझे बहुत मुझे बोला गया था I have to crack very socially active jokes. तो ये जितने भी मैंने अभी jokes मारे हैं, तुम लोग ढूंढ लो इसमें मैसेज। मैंने joke मार दिए, अब मैसेज तुम लोग ढूंढो, ये तुम लोग का काम है। But one last joke which I'll do is there's some, there's this boys talk, there's this one very derogatory way of objectifying women when boys are like, yaar nahi degi, and I'm like, bro, what is this language? Because mere school mein the aise log, mere school mein aise log the, they're like nahi degi, there's this dude I know जो सिर्फ उसको कुछ काम नहीं है, वो दिन भर बस इंस्टाग्राम पे देखता है किसी लड़के ने लड़की के साथ फोटो डाली, अगर डाल दी तो उस पे कमेंट कर देता है नहीं देगी, and I'm like bro, that's just so offensive, that's very derogatory, don't do that। वो तब भी कमेंट पे कमेंट किए जा रहा है नहीं देगी। उसका मैंने कीबोर्ड देखा यार, उस पे एन लिख दो तो उस कीबोर्ड सजेशन में आ जाता था। एंड I posted a photo, ये लोग ताली बजा रहे नहीं देगी पे, मतलब why? I posted a photo and उस पे वो बंदा कमेंट कर दिया नहीं देगी, and I'm like bro, माँ है मेरी, आज मदर्स डे है, and he's like हाँ जायदाद में हिस्सा नहीं देगी। Thank you guys, that's my time। Please before I go, I've been doing comedy for 3 years now, and I'm still learning, and it's very tough to do comedy, and every time I'm asked to judge a comedy show, I get very jittery and very shaky because you can't really judge who's funny because it's super subjective। So whoever's going to be the winner now, जो भी है ठीक है, अच्छी बात है, नहीं भी है तब भी यार तू ही विनर है यार, कोई दिक्कत नहीं है। And also I've been doing comedy for 3 years, so if you guys have any feedbacks on how I can improve myself, please message me on Instagram, and my Instagram handle is @tanmay and if you guys were offended by any joke, please message @tanmaybhatt, वो रिप्लाई कर देगा, उसको आते ही रहते हैं, ठीक है, उसको लगे यार ये IIT दिल्ली वाली क्या कब से मैसेज करने लगे। Thank you so much guys, thank you so much। Over to Kanishka। Didn't we all just have the time of our lives? All laughs, chuckles, and giggles. Well, it was fun. Now, I'd like to express gratitude on behalf of NSS IIT Delhi team to our esteemed panelists, Mr. Manoj Bhandari and Mr. Tanmay Tandon. Thanks a lot for being a part of our fest. It was fun with you people and the jokes. Anyways, let's move ahead. So, we are done with all the performances now. Any guesses, guys? What is next? Results, yeah, correct. Yeah, so results, it is going to take a while. Till then, I would like to invite Aryan Sharma. Could you please come on stage to assist me with the mic control? Yeah, Aryan, could you please come on stage to assist me with the mic? Aryan, just come. Come, karo, Aryan. ये प्री प्लान था पूरा, पता नहीं क्यों बुलाया। ठीक है, जज मत करना गाइस। तो गाइस, स्टैंड अप कॉमेडी का इवेंट काफी सॉर्टेड सा था और सॉर्टेड ही रहेगा हमारा एनएसएस का सब कुछ। अभी मैं आस्क करूंगा ध्रुव बंसल को स्टेज पे अराइव करने के लिए।
ध्रुव बंसल स्टेज पे अराइव करो, फास्ट करो, थोड़ा जल्दी करो। थैंक यू ध्रुव बंसल। माइक भी चाहिए? No? अच्छा, सॉरी। हेलो 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 हेलो, आवाज ठीक है? हेलो गाइस, मेरा नाम है ध्रुव बंसल। सो या आई एम गोना स्टार्ट माय सेट। तो मेरा ना एक दोस्त है आर्यन, वो बिल्कुल भी सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करता। तो जैसे मेरा एक टाइम था, मेरे काफी लंबे बाल थे, उसने मुझे बोला कि भाई एक बात बोलूं? हाँ बोल। भाई की बात मानेगा? हाँ मानूंगा मानूंगा पक्का। ये बाल है ना, कटवा दे। तू पागल है? आज ट्यूसडे है पता है, और मैं ट्यूसडे को बाल नहीं कटवाता। तो इन सब बातों में बिलीव करता है। मेरे पापा बोलते हैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करना चाहिए, बल्कि ट्यूसडे को तो बाल कटवाने चाहिए। यार तेरे पापा तो बड़े मॉडर्न है। नहीं वो नाई है। हाँ वो सच में नाई थे, उनका नाम था प्यारे लाल। और मैंने एक चीज नोटिस की थी कि प्यारे लाल से सिर्फ बच्चे और बुढ़े ही बाल कटवाते थे, बिकॉज दोनों को ही नहीं फर्क पड़ता कि वो कैसे दिखते हैं। तो बट फिर भी यार हम सिर्फ प्यारे लाल से बाल कटवाते थे, बिकॉज शहर के बाकी नहीं सिर्फ बाल काटते थे, बट प्यारे लाल बाल और बकचोदी दोनों काटता था। मतलब भाई इतनी बातें की मैंने प्यारे लाल से, और सिंपल बातें छोड़ो भाई, सेक्स एजुकेशन तक मैंने प्यारे लाल से लिया भाई। मतलब ठीक है, और उसने मतलब पता नहीं सारे कॉन्सेप्ट ही ला दे भाई, मेरे सारे सारे कॉन्सेप्ट ही ला दिए। और मैं भी बच्चे पैदा करना सीख रहा हूँ एक ऐसे बंदे से जिसने आर्यन जैसे चूतिया पैदा किया है। आर्यन इतना बड़ा चूतिया है। सॉरी ओके सो ठीक है, गाली नहीं देनी थी हमसे, दे सकते हैं। जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। अच्छा, आर्यन इतना बड़ा भोंदू है। आर्यन आर्यन इतना बड़ा भोंदू है ना कि वो तो मेरे ना एक गर्लफ्रेंड है प्रिया, और वो मतलब लेके जाने लायक ही नहीं है उसके साथ। तो एक बार प्रिया ने मुझे अपने घर पे बुलाया और आर्यन को भी लेके मैं चल गई। ठीक है, तो वो उसके पास ना एक लैब्राडोर है, और पूरा मतलब उसमें लगी पड़ी है कि आर्यन लाइक मेरे को लैब्राडोर नहीं पसंद। क्यों यार, लैब्राडोर मैं लाइफ मैं एवरीथिंग मैं सर, वो पीछे पड़ जाते हैं। हाँ मतलब वो तो है, बट फिर तेरे को कैसे कुत्ते पसंद है? बिकॉज कुत्ते तो सबको ही पसंद होते हैं। हैंडीकैप्ड बेस्ट। और हाँ मतलब यार ऐसी चीजें होती हैं, तो मैं नहीं लेके जाता आर्यन को। और फिर यार हमारा ब्रेकअप हो गया, बिकॉज यार वो बहुत ही फेमिनिस्ट टाइप की थी। वो मतलब तू मेरे यहाँ दोस्तों ने मुझे कहा कि तू एक बार उससे बात करके ऐसे, यार ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है, तू उससे बात कर। मैं कहा ठीक है। तो बेस्ट थिंग दैट टोल्ड मी कि कोई ना अपनी इनसिक्योरिटी शेयर कर दे उसके साथ। तो इनसिक्योरिटी तो मैं उसके पास गया कि यार प्रिया ऐसे करके ना मैं ना कभी कभी ऐसे स्टैमर करता हूँ। तो लाइक करके दिखाई हूँ, लाइक ये कोई टैलेंट थोड़ी है, मतलब करके दिखाई हूँ। लाइक किसी लंगड़े को बोल के भाई चल के दिखाई हूँ। तो मैं क्या करूँ? चल चल कोई गाना गा दे। वो मेरे को गाना बहुत पसंद है, मेरे महबूब। मैं क्या ठीक है, मुझे चढ़ गई बकचोदी। मैं मजे लूंगा इससे। तो मैंने कहा कि मेरे महबूब बू बू बू। तो हाँ उसके बाद हमारा ठीक है okay, so yeah, I'm gonna wrap it up with the last joke. Anyone in the audience would like to interact? If okay, not up for it. Thank you so much, Dhruv. That was it. So now I'd like to request our judges, Tanmay Tandon and Manoj Bhandari, to announce the results, please.
Hi, hello everyone. So finally, the result time is here. So first of all, congratulations to all the participants. You guys have done your best, and as Tanmay rightly said, that we are no ones to judge you, but it's just that we have been like in the forefront on the stage for like 3 years. So maybe we can just give our opinions. That's it, nothing else. So please don't feel bad. Everybody was good. So यहाँ पे there were some restrictions, of course, due to which you could not perform to your best, I believe. But all the participants were good. And can we have a huge round of applause for all the participants first, please? Great, great. So I think overall, जितने भी participants थे, there were 1, 2, 3, 4, 5 participants. I think all of them were good. थोड़ा सा social issues पे कम बोले लोग. It's difficult to do comedy on social issues specifically. It is very difficult क्योंकि उसमें तुम्हें serious होना पड़ता है. इतने serious topic पे अगर तुम joke मारते हो तो it is actually very difficult. But then people tried, and I'm sure you guys जिन्होंने भी perform करा है, I wish you all the very best in your future, and wish to see you somewhere, somewhere maybe in Delhi or in Mumbai on stage sometime. And if you ever come across, do meet me in person whenever we are on stage. It'll be a good. We'll have a chill time together. So I will announce the second runner-up for the day. So the second runner-up, and that is the third place. Can we have a huge round of applause for Abhinav Mohanty, guys? Tanmay, can you announce the first runner-up, please? Yes. Okay. Are we ready for the first runner-up? Start clapping. Start clapping. Please give it up for Madhav Rathi. Could you please come on the stage? Yeah, I just want to say one thing. ये जितनों को भी पौधे मिल रहे हैं, please घर तक लेके जाना. IIT के कैंपस में ही मत छोड़ देना. These are social causes के लिए हमने कॉमेडी करी है, and we should maintain it at least till we reach home. All right. So the final name and the first, the guy who's like come first in today's event. Let's give a huge round of applause and welcome on stage Saksham Sharma, ladies and gentlemen. Sonu. Okay, so thank you so much, judges. So this was it. The cash prize and other awards would be delivered to the winners in a while. And all students are required to enroll in the course eLearn, which the link would be circulated in your WhatsApp group. And you all have to upload the same in the Google form for NSSRs, to avail the NSSRs. Also, there must be a sheet floating right now. Okay, so you all need to enter your name and entry number to avail NSSRs. So congratulations to all the winners and participants. Could we have another big round of applause for everyone? Come on, guys. Well, here comes Bazinga to an end, and along with Bazinga, I
Kaizen 2022 comes to an end too. It has been a great journey, and now I'd like to invite the person without whom it would not have been possible to bring this fest to its success. His support has been with us throughout the fest. So I invite Professor Samrat Mukhopadhyay, the faculty coordinator of NSS IIT Delhi, to bid the final vote of thanks. Big round of applause, people. सर मैं फर्स्ट प्राइज आप ही को देता सर, फॉर श्योर सर। वो हैंडराइटिंग वाला बच्चा मैं ही हूँ। Both the mics. Good evening, everyone. So it was a wonderful series of performances by all students, and lovely sense of humor from our judges, and they had also their bit to show us. I'm sorry, but I think for stand-up comedians to see people in mask is not the best thing. And that's why Tanmay was saying that. I mean, I understand this as a teacher also, when I face students with mask, I don't feel good, right? So we all live on expressions. So that is the feedback, right? For a musician also the same thing happens. With this, we come to the end of Kaizen 2022. It had been a wonderful 3-day event, starting with Anil Swarupji, the very dedicated IAS officer, sharing his experiences in the introductory session, along with the Dean of Students addressing us, and then subsequently at the end by the Deputy Director Strategy and Planning giving the vote of thanks. And then a series of events, and where we had to do it in a hybrid mode because of restrictions, some as online events and some as offline. Generally, Kaizen would be a 3-day event continuously offline. So that spirit was not there because of restrictions. But anyway, but still we had a lot of fun and a lot of things where we could learn something. I thank the whole NSS team, the core team, along with a lot of volunteers who played a pivotal role in planning for Kaizen. And I know that how they had burnt the midnight oil, because I am part of the textile department, and they use the textile committee room for all their planning and execution, right? So I know how hard they have worked. So can we have a big hand for the whole Kaizen team, not because I am the faculty coordinator of NSS, but I can vouch that NSS is the body in IIT who doesn't make a lot of sound, but the same amount of work, just like what happens almost like many other bodies, they do the same, but with not so much of noise. So thank you guys for keeping all protocols. And the Dean was again complimenting that NSS is the body which gives us the least trouble, right? So that's a wonderful thing to listen from a Dean of Students, right? So, and I would also thank all the faculties and the administration of IIT Delhi, who had been very cooperative in giving us all whatever we asked for. I'm also thankful to all the audience, the people who have come, right? So who have performed, many people have performed for us. So I sincerely thank on behalf of the NSS family, everyone who has contributed in some way or the other to make Kaizen 2022 a success. Thank you. Thank you so much, sir. I hope you liked it all too. At last, I'd like to thank Professor Samrat Mukhopadhyay and Mrs. Himanti Mukhopadhyay. Thank you so much for joining us, ma'am.
and it was an honor having you here. Also, I'd like to extend my hearty thanks to our judges, Mr. Tanmay Tandon and Mr. Manoj Bhandari, and all the participants as well, who definitely helped us in making this event a success. Also, thank you for being such a great audience. Thank you so much, guys.